Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will discuss the bacteriology MCQs of the cpsp. 80-year-old male है, bedridden है, 1 year से present with a complaint of the fever and the cough with the sputum yellowish in the color. Lower lobe जो है वो पस से fill हुआ है. It turn into the consolidation after his most common organism is a strep virus. ठीक है, bedridden patient है और उसमें सारे sputum के symptoms of strep pneumonia. ठीक हो गया. Presented with a complaint of the fever with a child and the thick yellow tenacious sputum since 4 days. Organism involved is a step 4 years. Okay, microorganism with a fluorescent pigment and resistant to standard antibiotic is the pseudomonas. ठीक है, फ्लोरेसेंट पिगमेंट है और रेजिस्टेंट टू स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक. अगर तो देखो एक्टिनोमाइसिस जो येलो सल्फर यूज़ होते हैं स्टेप 4 ईयर्स से गोल्डन येलो होंगे. और इसके अलावा फ्लोरिसेंट से बताया है सूडोमोनास. ठीक है, जिसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट होते हैं. चाइल्ड विद अ प्रोफ्यूज डायरिया 20 एपिसोड पर डे एंड शूटिंग स्टार आफ्टर द मोटिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सीन बट विल बी द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द स्पेसिफिक मीडिया इज द विब्रियो कोलरा. ठीक है, इसमें शूटिंग स्टार की बात होगी. उसके बाद बैक्टीरियम मेनिंजाइटिस केस विद अ टिपिकल पिक्चर मोर देन इंक्रीज प्रोटीन एंड द न्यूट्रोफिल मोर देन द lymphocyte. He was having the rash around the neck, ankles and the signs of the meningitis. On the basis of the gram strain, doctor started the IV set. What are the results on? So इसमें क्या कौन सी ग्राम स्ट्रेन की ग्राम पॉजिटिव आपने याद रखना है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई. पेशेंट इन द ICU with a CVP past developed rash around it. Culture show catalase positive, catalase negative. What is the way by which organism cause the intravascular system is the exopolysaccharides. ठीक है, उसके बाद ये स्टेफ एपिडर्मेटाइटिस है. Person got a pre-cord cut, the finger was tender, painful and the pus developed at that side. Culture show the step 4 years. How it kicks up the phagocytosis is the secrete EFP. Okay. A person went to Thailand and presented with a diarrhea which is watery and large as a mountain stool. Sample donut shaped cysts were found. Cause is the cryptosporiasis. Okay, greenish vaginal discharge है by which organism? डोनट सिस्ट जो होती है वो क्रिप्टोस्पोडियसिस की होती है. ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो सूडोमोनास से होता है. और टाइटस मीजिया की कॉज स्ट्रेप निमोनिया होती है. विरुलेंस वेक्टर स्टेप 4 ईयर्स ऐसा प्रोटीन ए है. स्टेप 4 सल्फर ग्रेन्यूल जो है उसमें कंटेन एक्टिनोमाइसिन. ट्राइड ऑफ द साइनस ब्रेडिकार्डिया एब्सोल्यूट न्यूट्रोपीनिया. हेपेटोस्प्लेनोमेगाली. डायग्नोसिस विल बी द टाइफॉइड. ब्रेडिकार्डिया है, न्यूट्रोपीनिया, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली. विच कैन बी द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन सा होता है? एच इन्फ्लुएंजा. डिफ्थीरिया ग्रोइंग मीडिया जो है वो लोफ्लर होता है. ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा में चॉकलेट होता है, नाइजीरिया में मार्टिन होता है, पर्टूसिस में बॉर्डेट होता है, डिफ्थीरिया में लोफ्लर होता है, इकोलाई में EMB होता है. रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इज कॉज बाय द रिक्टेसिया. Step 4 is differentiated from other by the staining positive for the coagulase. उसके बाद है pyogenic peritonitis caused by the bacteroids. Neurogenic hypertensive patient admitted in oncology ward with a history of the dysuria and the high-grade fever. His blood culture yield the growth of the Pseudomonas aeruginosa. Suggests that the disease is a result of the excessive release of the following bacterial product is the endotoxin. Okay. उसके बाद नेक्स्ट देखो 30-year-old मेल विद द हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअल एक्सपोयर कम विद द इंडोरेटेड पेनलेस अल्सर ओवर द पेनिस विद द एवर्टेड मार्जिन. डायग्नोसिस इज द सिफिलिस. ओके, सो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम है. कोलेंजियोकार्सिनोमा कॉज बाय द कोलोनेरिटिस साइनसिस है. पेशेंट आफ्टर ईटिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट इन द डिनर देन एट द मिड नाइट प्रेजेंट विद द डायरिया ड्यू टू द स्टेप 4 years. आफ्टर ईटिंग इन द रीजन देन मिड नाइट उसको डायरिया प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट किया विद स्टेप 4 years. पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शियस थिक येलो स्पुटम है प्रेजेंट ड्यू टू द स्टेप 4 years. पेशेंट इन द ऑन्कोलॉजी वार्ड डायग्नोसिस विद द case of the Pseudomonas aeruginosa. Which one of the following cause the infection is an exotoxin? Young girl present with a foul smelling discharge है. pear shaped triphosphate is a trichomonas vaginalis है. Pus state accumulate in the bile or the abscess is mainly composed of the neutrophils. Person had a molar teeth extraction, developed the mandibular swelling with a yellowish gray like this cluster. Colonist organism is a step 4 years है. Actinomycosis jar draining abscess. The finding will be the granuloma where the abscess है. 67-year-old man presented with a history of the cough for the last 7 days and it's also associated with a thick mucoid sputum. The organism responsible for the Klebsiella. Okay, स्टेप 4 years में थिक येलो स्पुटम आते हैं. स्ट्रेप्टोकोकस में ब्राउन डस्टी आते हैं. क्लेब्सिला में करंट जेली. द ऑर्गेनिज्म कॉज द ग्लोबल ब्लाइंडनेस इज द क्लेमीडिया.
Most common organism responsible for causing the infection in the post-planectomy is the strep pneumonia. 2 weeks after the sore throat, child present with the hematuria, hypertension, and the mild proteinuria. Likely organism for causing the infection is the group A streptococci. Most common cause of the hospital-acquired infection will be the Strep aureus. Cause of the urease positive UTI is the Proteus. Urease negative organism is the E. coli. Okay, gram negative is differ from the gram positive because of the periplasmic space. Which part of the bacteria increases toxicity is the capsule shape of the streptococcus pneumoniae is the diplococci. Okay, but catheter comes to you with the complaint of the cough and the fever, which since 1 week just X-ray showing the features of the pneumonia. Most commonly organism involved is the chlamydia psittaci. Okay, 8 year child है comes to you with the complaint of the fever, throat. इसके अलावा enlarged torsos है, grayish membrane है. Most commonly microorganism is the corneal bacterium.